जहां तक उनका अपना सवाल है, कि वो शख्स जो है वो इस सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद वही लेन there's a central sort of power. We have more than two-thirds majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center. We have constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, so as Punjab is concerned, we are neck to neck. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want is that the mandate of the people should be accepted and restored, and all those seats from us, according to one estimate, they number about 65. They should be so a government in KP at center. And we feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right, and nobody should have power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. जी हमें अभी तक कोई नहीं छोड़ के गया सिवाय एक शख्स के जिसके ऊपर हम वो लीगल एक्शन ले रहे हैं। और ये जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि दो पार्टियों के साथ हम इसीलिए अलायंस करने जा रहे हैं ताकि ये इसको लीगली भी मौजूद है। अभी आपको बस इसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ। मुझे कोई एक हफ्ता दे दीजिए, मैं ये सब लोग कंसोलिडेट करके बसरा साहब को कहूँगा कि प्रेजेंटेशन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सुन लें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रऊफ साहब ने बात फॉर्म 45 मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड करके हम बाकायदा आपको प्रेजेंटेशन देंगे, बिल्कुल देंगे। नहीं यार, आप कर चुके हैं, प्लीज। It has been executed. That has been executed. Yes. Going forward, who will be your prime ministerial candidate? Because Imran Khan has not contested the election. So who's going to be the trusting with this alliance? One, that the Prime Minister, that Imran Khan nominates. This is part of